Hello students, you have studied about 2D shapes such as square, rectangle, triangle, trapezium, etc. in your previous classes. Also you know how to find the perimeter and area of these shapes. Now say if I want to make a triangular garden in my house. अब मुझे उसके आसपास फेंस लगाना है, तो उस फेंस की लेंथ में कैसे कैलकुलेट करूं? Exactly, by finding the perimeter of my garden. अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय एडिंग इट्स थ्री साइड्स ए, बी एंड सी. अब मेरा गार्डनर कहता है कि मुझे इसके पूरे सरफेस पे ग्रास लगानी है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? यस, आई नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ माय गार्डन. एंड वी नो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. इट्स हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. बट इसके लिए मुझे एक बेस चाहिए और उसके ऊपर एक हाइट चाहिए. Now what if I don't have the height of my garden? I only have 3 sides. तब मैं क्या करूँ? So let's say कि अगर मेरे पास एक right angle triangle है, तो उसकी दोनों sides ही उसकी base और height है. Then I can use the formula half into base into height and find the area as half into 6 into 8, which would be 24 square meter. So mission successful. Now if I say कि my garden is an equilateral triangle, say of side 10 meter, then what should I do? So let's try to make a median into my garden. Now that median would also be the altitude of triangle. Why? Because median divides it into two congruent triangles. So अब using Pythagoras theorem, I can find this altitude as 5 square root 3 meter. So I will put this value in my formula half into base into height, and my area would come out to be 25 square root 3 square meter. So again mission successful. And you can use this same method for isosceles triangle by making its median. But now if I say my triangular garden has sides 7 meter, 8 meter and 9 meter. Clearly this is an scalene triangle. Now I cannot use this formula because I don't know the height of scalene triangle and I cannot find it also. So what should I do now? So for this, a mathematician named Heron came to my rescue. अब Heron ने 3 books लिखी हैं on 2D and 3D shapes. So book 1 specially deals with area of 2D shapes, square, rectangle, triangle, etc. So उन्होंने फॉर्मूला दिया है फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, और ये फॉर्मूला कहलाता है हीरोन्स फॉर्मूला नेम्ड आफ्टर हिम. एंड दिस फॉर्मूला सेज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. अब यहाँ एस क्या है? सो एस इज द सेमी पेरीमीटर और हाफ ऑफ द पेरीमीटर. सो इट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2. अब मैं ये तीनों साइड्स इस फॉर्मूला में पुट कर सकती हूँ एंड आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ माय गार्डन. सो इट विल कम आउट टू बी 12 square root 5 square meter. So again mission successful. Now I can use this same formula to find a direct formula for equilateral triangle, say of side A, and that would come out to be square root 3 by 4 a square. Now I can find area of any equilateral triangle using this direct formula. Now what you can do is, you will find the area of both right angle triangle and equilateral triangle and verify if the area using Heron's formula is same as the previous one. So this would be your home task. So this is all for today. We'll meet next time with a new challenge. Goodbye.